Assalamu alaikum everyone. So this is just a very small video which is the continuation of the previous. ठीक है. So last video में we discussed about all the mechanisms of deposition of circulating immune complexes or immune complexes बनते कैसे हैं. ठीक है. But in this video it is the glomerular injury after immune complex formation. Like we have the glomerular complexes deposited now. अब how does the injury actually happen? ठीक है. सो अब पहली बात तो आइदर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं फ्रॉम सर्कुलेशन या फिर देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन दैट लीड्स टू इंजरी. ठीक है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंजरी तो इंजरी हैपन्स बाय दीज, या तो ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन होगी, देयर विल बी मेसेंजियल एंड एंडोथेलियल सेल प्रोलिफरेशन, और जो है वो हाइलिनोसिस एंड स्क्लेरोसिस. ऑल ऑफ दीज आर टॉक्ड अबाउट इन द प्रीवियस वीडियो. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू बेसिकली जब ये इम्यून सेल्स डिपॉजिट होते हैं ना, तो दीज डिपॉजिट्स बेसिकली लाई इन द मेसेंजियम बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स एंड द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है. और जो है ये दे टेंड टू बी लोकेटेड एट मोर देन वन साइट. ठीक है. और ना ये अब बेसिकली दो टाइप के होते हैं. जो एक्सोजनस वाले होते हैं ना, उनकी ना इम्यून कॉम्प्लेक्सेस फॉर एग्जांपल पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल अगर हो गए व्हेन दे डिपॉजिट ऑन द मेसेंजियम, तो जो है क्योंकि उसमें फॉरेन एंटीजन होते हैं ना, बिकॉज दे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, राइट, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, तो दे गेट डिग्रेडेड बाय द इन्फ्लेमेटरी न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, और ना उसमें एंडोजेनस लाइक प्रोटीएजेस आ जाते हैं, एक इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है बॉडी का. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ लाइक इट टेंड्स टू रिजॉल्व इटसेल्फ. ठीक है. अच्छा, अब जो है ये so this is how the immune complex is degraded, and during this inflammation process जो there is like wear and tear to the mesangium and to the glomerular basement membrane, जिसकी वजह से जो है वो loss of kidney function हो जाता है. ठीक है. अब जो है coming on to the types, there's cationic अगर होंगे they will cross the glomerular basement membrane and they will go into the sub-epithelial location. ठीक है. लेकिन इफ़ दे आर एन आयनिक तो दे गेट ट्रैप्ड विद इन दी सब एंडोथीलियम. ठीक है. और अगर वो न्यूट्रल होंगे तो वो बस मेसेंजियम के अंदर दे विल टेंड टू एक्यूमुलेट. ठीक है. एंड इफ़ दे आर वेरी लार्ज एंड सर्कुलेटिंग, तो अगर लार्ज और सर्कुलेटिंग है तो फिर ये मोनोसाइट्स और फैगोसाइट सिस्टम ना उनको क्लियर कर लेगा आराम से. सो दिस इज़ जस्ट द टाइप ऑफ डिपॉजिट्स कि डिपॉजिट्स कैटाइनिक हैं, अनाइनिक हैं, न्यूट्रल हैं, या बहुत लार्ज हैं. सो दिस इज़ हाउ इट लाइक रिजॉल्व्स. ठीक है. दिस इज़ हाउ द रेजोल्यूशन हैपन्स. ठीक है. और जो है वो इट गिव्स जब हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टेनिंग करवाते ना, इट गिव्स अ ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टेनिंग अलॉन्ग द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू द सेल मीडिएटेड इंजरी इन glomerulonephritis. ठीक है. व्हेन वी टॉक अबाउट इंजरी ना, तो अब ऑब्वियसली सेल मीडिएटेड होती है. एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस आते हैं और टी सेल्स आते हैं. ठीक है. अब जो है राइट, सो दिस इज़ लाइक जस्ट अबाउट द रोल ऑफ द इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स. ठीक है. तो नंबर वन, देर इज़ लाइक रोल ऑफ एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस एंड टी सेल्स. ठीक है. एंड दे जब भी एक्सपोजर होता है, एक्सपोजर टू द एंटीजन इन द ह्यूमंस, तो दे गेट एक्टिवेटेड, और ना इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं दे गो टू द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर वहाँ पे दे टेंड टू इनिशिएट ग्लोमेरुलर इंजरी, और फिर एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स भी जो है फिर दे इंक्रीज द इन्फ्लेमेशन. So this is just the role of cells that in the glomerular injury. Now coming on to the mediators of the glomerular injury. Now mediators जो होते हैं ना, they are divided into two. Cells भी होते हैं and they're soluble mediators. Now talking about the cells, you just need to know, like this is not important, ये हम पहले भी थर्ड ईयर में कर चुके हैं, but just like an overview, there's neutrophils, monocytes, macrophages, T lymphocytes, platelet aggregates होते हैं in ग्लोमेरुलस ड्यू टू इम्यून मीडिएटेड इंजरी, और रेजिडेंट ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं. ठीक है. दीज आर ऑल द टाइप ऑफ सेल्स दैट विल कॉज द ग्लोमेरुलर इंजरी. और सॉल्युबल मीडिएटर्स में पहले तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर्स आ जाते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज दे आर सॉल्युबल. इकोसाइनॉइड्स, साइटोकाइंस, कीमोकाइंस, कोआगुलेशन सिस्टम, इनके जस्ट लाइक रिमेंबर द नेम्स. ठीक है. व्हाट इज़ इन्वॉल्व, बाकी दैट्स इट. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू एपिथेलियल सेल इंजरी, वी ऑल्सो से दैट दिस इज़ नोन एज पोडोसाइटोपैथी. इसमें जो है जो पोडोसाइट्स होते हैं ना, दे गेट इंजर्ड. विसरल एपिथेलियम जो पोडोसाइट्स होते हैं ना, उसकी ना फुट इफेसमेंट हो जाती है. तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं टू पोडोसाइट एंटीजन्स,
और जो है they this is a feature of focal and segmental glomerular sclerosis. We're going to learn more about this in the nephrotic और ये glomerular sclerosis में, ठीक है. So for now this is just a brief overview of the entire injury, glomerular injury.